So under the types of excretion, we will go for the three different types. First is ammonotelism. Ammonotelism, the excretory waste material is ammonia. And the animals which are excreting the ammonia are called as ammonotelic animals. Okay, ammonotelic animals. Character क्या है? ना ammonia is highly poisonous or highly toxic. Highly toxic and highly soluble in water. ये दो पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ammonia is highly toxic and is highly soluble in water. जो बहुत ही highly soluble है water में एंड जो हाईली टॉक्सिक है उसको एक्सक्रीट करने के लिए सबसे ज्यादा वाटर चाहिए कि नहीं? अदरवाइज दैट विल डिपॉजिट इन द बॉडी एंड दैट विल पॉइजन द बॉडी. तो इसीलिए अमोनिया कौन एक्सक्रीट करेगा? जिसके पास ज्यादा वाटर है कि कम है? समझिएगा पॉइंट को. एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक. अमोनिया हाईली पॉइजनस और हाईएस्ट टॉक्सिक. उससे कम होगा यूरिया, उससे कम होगा यूरिक एसिड. अकॉर्डिंगली सॉल्युबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस. सबसे लिस्ट सोल्यूबल कौन है? यूरिक एसिड. उससे ज्यादा कौन है? यूरिया. सबसे ज्यादा कौन है? अब देखो इसको बेसिक कंसेप्ट. ये जो तीन अलग अलग टाइप का एक्सक्रीशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ना हैबिटेट के ऊपर. जो बहुत ही ड्राई हैबिटेट में रहता है, जो पानी नहीं पीता है, उसको पानी का स्कैर्सिटी है मान लेते हैं सपोज टू. जैसे कि बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, उनको क्या वाटर कंजर्व करना है कि वाटर एलिमिनेट करना है? कंजर्व करना है तो क्या एक्सक्रीट करेंगे? जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर मतलब वाटर अवेलेबिलिटी इज देयर, सो दे विल एक्सक्रीट व्हाट? अमोनिया. जो मरीन वाटर में रहते हैं, वाटर मैंने आपको कल समझाया था प्रीवियस क्लासेस में कि भाई अगर सी वाटर है तो जरूरी नहीं कि वाटर बहुत ज्यादा है. सॉल्ट है वो, तो वहां पे वाटर का स्कैर्सिटी है, कम है, तो उनको क्या एक्सक्रीट करना है? अमोनिया एक्सक्रीट करना है. क्या मर जाएंगे वो? So they need to either excrete the urea or uric acid. Mostly they excrete what? ना urea, because urea is act as a osmolalite. Osmolarity maintain करने के लिए यूरिया की जरूरत पड़ता है, इसलिए वो यूरिया एक्सक्रीट करता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द हैबिटेट और द कैरेक्टर दे हैव. जिस तरीके से वो अडॉप्ट करते हैं उसी तरीके से उनका एक्सक्रीशन होता है. एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है. सो हाईली टॉक्सिक एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर. 1 gram ammonia excretion need approximately 500 ml of water. Third point, तो ये diluted urine प्रोड्यूस करेंगे कि concentrated urine प्रोड्यूस करेंगे? Diluted urine प्रोड्यूस करेंगे, means more urine की less urine? More quantity of water, so more urine. So they will produce dilute urine, means more amount of urine. Example, amoeba, sponges, हाइड्रा. मैं यहाँ पे एक एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, बट आप सोच लीजिए कि पूरा एंटायर जो उनका जो फाइलम है वो भी आ जाएगा. जैसे कि स्पॉन्जेस हो गया पोरीफेरा, हाइड्रा हो गया निडेरिया.
crayfishes comes under what ना arthropods. हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम. टैडपोल लार्वा ऑफ द फ्रॉग वो क्या है? एक्वाटिक है कि नहीं? एडल्ट फ्रॉग तो टेरेस्ट्रियल है, लेकिन टैडपोल क्या है? एक्वाटिक है. इसीलिए डिफर कर जाता है. टैडपोल एमोनोटेलिक हुआ तो फ्रॉग हो गया यूरियोटेलिक. फ्रॉग एक्सक्रीट करता है यूरिया, लेकिन टैडपोल क्या एक्सक्रीट करता है? अमोनिया. डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? हैबिटेट. सो टैडपोल हो गया. नेक्स्ट ईयर एक्वाटिक इंसेक्ट. Aquatic insect also excrete ammonia. Aquatic mollusk that also excrete what? The ammonia. And the most important is what? Na freshwater fish or bony fish. क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अमोनिया एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं? Yes, yes. So this is all about the ammonotelism. We are coming to ureotelism. Ureotelism, they are excreting what na? Urea. Excrete urea and are called as ureotelic animal. Less toxic than ammonia. Less soluble in water. And 1 gram urea excretion need approximately 50 ml of water. And याद रखिए ये जो लेस टॉक्सिक है ना, कभी कभी ये आपको ऐसे ही पूछ लेता है कि व्हाट इज द टॉक्सिसिटी विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? ना approximately 1 lakh times less toxic than ammonia. तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमोनिया कितना ज्यादा हाईली टॉक्सिक है. एंड उसको एक्सक्रीट करना कितना चैलेंज की बात है. उसको एक्सक्रीट करना मतलब बॉडी से सारे के सारे वाटर को निकाल देना. तो हम लोग क्या कर सकते हैं अमोनिया को एक्सक्रीट? हम लोग यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, तो उसके साथ जितना वाटर एक्सक्रीट होता है उसको कंपेंसेट करने के लिए हम लोग वाटर पीते हैं. अब सोचिए अमोनिया अगर एक्सक्रीट करेंगे हम लोग का हालत 24 आवर पाइप लेके चलना पड़ेगा. So they excrete concentrated urine. And urea जो formation होता है, that is called as urea cycle, which is occurs in the liver. हम लोग पढ़े थे डाइजेशन चैप्टर में कि यूरिया सिंथेसिस ऑकर्स इन द लिवर. उस साइकिल को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. एग्जांपल खाली दे देते हैं, जैसे कि मरीन फिशेस, द फ्रॉग, मैमल्स, एंड ये जो फ्रॉग मैंने लिखा है तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आ जाएगा कि नहीं है? ये एक्वाटिक एम्फीबियंस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस. तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस कम्स अंडर द यूरियोटेलिक. लेकिन अगर यही एक्वाटिक एम्फीबियंस होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं फ्रॉग जो है वो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, टोड आल्सो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, बट नेक्चुरस
नेक्चुरस जिसको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं मड पप्पी, मड में रहते हैं, पानी में रहते हैं। आप लोग कभी देखे होंगे गांव वगैरह में जो पॉन्ड है, जो तालाब है, उसके साइड में जो मड रहता है ना, मड में छोटा छोटा ऐसे टैडपोल लाइक फिश लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, देखने में फिश लाइक लगता है लेकिन वो फिश नहीं है, दैट इज एक्चुअली मड पपी और नेक्चुरस। वो फ्रेश वाटर एम्फीबियंस हो गया, ठीक है। सैलामेंडर, फ्यू सैलामेंडर्स आर टेरेस्ट्रियल, फ्यू सैलामेंडर्स आर दैट इज एक्वाटिक, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बस खाली फ्रॉग एंड टैडपोल याद रखेंगे तो काफी है। वी आर कमिंग टू द यूरिया साइकिल। और ऑर्निथीन साइकिल, यूरिया साइकिल और ऑर्निथीन साइकिल, दिस will takes place in liver। लिवर सेल का नाम क्या है? हेपाटोसाइट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3 that is ammonia gives rise to carbamyl phosphate। देखो एल्जिनोसक्सिनिक एसिड को हम लोग एल्जिनोसक्सिनेट बोलते हैं, वैसे ही फ्यूमेरिक एसिड को क्या बोलते हैं? फ्यूमेरेट। जैसे पायरुविक एसिड को बोलते हैं पायरुवेट, मैलोनिक एसिड मैलोनेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ऑक्सैलो एसिटेट। तो यहाँ पे मैंने एल्जिनोसक्सिनेट लिखा है, मतलब एल्जिनोसक्सिनिक एसिड, ठीक है ना। नाउ this is the urea cycle or ornithine cycle। एस्पारेट और एस्पार्टिक एसिड, एस्पारेट और एस्पार्टिक एसिड, 2 ATP to be changed into 2 ADP plus 2 inorganic phosphate। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है with the release of what? Now with the release of urea। एंड यहाँ पे फ्यूमेरेट और फ्यूमेरिक एसिड रिलीज होता है। तो टोटल here it is 5 reactions are there। This is reaction number 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is the 5th step। तो ऑर्निथाइन साइकिल में टोटल कितना स्टेप है ना? 5। एंड ऑर्निथीन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल, राइट? एंड ऑर्निथीन इज आल्सो रिपीटिंग द साइकिल। तो ऑर्निथीन व्हिच इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन आल्सो एक्ट एज ए स्टार्टिंग सबस्ट्रेट, क्योंकि यही साइकिल को क्या कर रहा है? कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं?
That is why it is called as what now ornithine cycle. इसको साइटोलिन साइकिल क्यों नहीं बोले, अर्जिनिन साइकिल क्यों नहीं बोले, क्यों इसको ऑर्निथिन साइकिल बोले? बिकॉज द एंड प्रोडक्ट इज कंटिन्यूइंग द साइकिल. तो यहाँ पे एंजाइम का नाम हम लिस्ट दे देते हैं. भी कंप्लीट नहीं हुआ है. Aspartate is also the source of ammonia, and here also 1 ATP used with the removal of one AMP with 2 inorganic phosphate. अब एंजाइम का लिस्ट हम मेंशन कर देते हैं. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 2 मिनट में. 5 एंजाइम है, 5 एंजाइम का नाम यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं. अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 पे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. फर्स्ट एंजाइम ऑर्निथाइन सॉरी कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज. कार्बामाइल फॉस्फेट synthetase. So this is the first enzyme which is responsible for the first reaction, first stage. Second is ornithine carbamyl transcyclase. Number 3 arginosuccinate synthetase. Number 4 arginosuccinate lyase. Arginosuccinate lyase. And the fifth one is arginate. 5 step 5 reaction. अभी मैं यहाँ पे एक डिमार्केशन किया हूं, देखिए पूरा डॉटेड लाइन में. डॉटेड लाइन का जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. एंड डॉटेड लाइन के जो नीचे वाला पोर्शन है जो रिएक्शन का और साइकिल का दैट इज ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म. माइटोकॉन्ड्रिया हेपाटोसाइट सेल और लिवर सेल में कुछ पार्ट होता है, बाकी मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे होता है ना, साइटोप्लाज्म. कंप्लीट है क्या? मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी जल्दी करिए. Let's see. Everybody see. In the first step, one molecule of, in the first step, as you can see, one molecule of carbon dioxide and one molecule of ammonia, right? By means of this enzyme number 1 carbamyl phosphate synthetase, that is change into carbamyl phosphate, and ये किसके अंदर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लिवर सेल.
because carbamyl phosphate synthetase एंड ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांससाइक्लेज, ये जो दोनों एंजाइम है ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है कि साइटोप्लाज्मिक एंजाइम? माइटोकॉन्ड्रियल। हाँ, इसीलिए दोनों रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये तीनों एंजाइम कहाँ पे रहता है? साइटोप्लाज्म। क्लियर है? So in the first step, the carbon dioxide and one molecule of ammonia gives rise to carbamyl phosphate. Now, ऑर्निथिन which is to be end product, यहाँ पे जो ऑर्निथिन end product है, अभी ऑर्निथिन किसके अंदर एंट्री किया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री किया कि नहीं? मैं दोबारा हर चीज मैं बार बार बोलता हूँ, जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप अगर लिखने में व्यस्त रहेंगे तो मेरे पास आपको डाउट में आना पड़ेगा। जो अभी भी कुछ बच्चे कर रहे हैं, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बातचीत करना, जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप अपने लिखने में व्यस्त रहना। फंसोगे, इतना बुरा फंसोगे कि मेरे से डांट खाना ही पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। So ornithine is entering into mitochondria. Now carbamyl phosphate and ornithine by means of the enzyme number 2 ornithine carbamyl transcyclase enter into the mitochondria to convert into what? Na citrulline. The enzyme is called as what? Na ornithine carbamyl transcyclase. अब ये साइट्रोलिन क्या होगा ना? अभी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल गया, फिर से साइट्रोलिन अभी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ गया। साइट्रोलिन प्लस aspartic acid और aspartate which is the second source of what? ना अमोनिया। फर्स्ट स्टेप में एक ही अमोनिया एंट्री किया था, है कि नहीं? अब थर्ड स्टेप में सेकेंड अमोनिया एंट्री किया। Who is the second source of ammonia? Aspartate or aspartic acid. Now this aspartic acid along with the citrulline that gives rise to what? ना arginosuccinic acid or arginosuccinate। अब आपको गौर करना है, फर्स्ट स्टेप में देखिए 2 एटीपी यूज हुआ था, 2 एटीपी ब्रेक डाउन होगा तो 2 एटीपी प्लस 2 पीआई विद द रिलीज ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में कितना एटीपी यूज हुआ? 2। लेकिन साइटोप्लाज्म में कितना एटीपी यूज हुआ? 1। एंड यहाँ पे एटीपी 2 बार ब्रेक होता है, 1 एडीपी देन एडीपी चेंज होके एएमपी, इसीलिए 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ। दिखाई दे रहा है कि नहीं? Now this ADP, sorry, aspartic acid plus citrulline gives rise to the arginosuccinic acid or arginosuccinate in presence of 1 ADP with the release of 1 water molecule also. अब ये arginosuccinic acid और arginosuccinate under the influence of the fourth enzyme arginosuccinate lyase, that will be break down into what? ना arginine plus fumarate। तो किसका ब्रेक डाउन हुआ? arginosuccinic acid का into arginine and fumarate। तो fumaric acid और fumarate that will be enter into the Krebs cycle, that will again form the aspartic acid। अब ये arginine क्या होगा ना? फिर से ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होके किस में कन्वर्ट हुआ? ornithine plus urea with the addition of water or releasing of water। अब आपको कंक्लूजन समझना है। नंबर 1, one molecule of urea formation need how many molecule of ammonia? 2 molecule, which is the second source of ammonia? Aspartic acid। What is the number of ATP to be used for the release of one molecule of urea? 3। 2 in mitochondria, 1 in cytoplasm। समझ में आया? What is the gross number of water molecule released in one ornithine cycle? ग्रॉस मैंने पूछा है, ग्रॉस एंड नेट में डिफरेंस जानते हैं? इसलिए सुनो पहले। व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? 2। 2 रिलीज हुआ, 1 यूज हो गया, तो कितना नेट बचा? ग्रॉस एंड नेट में डिफरेंस तो है, बार बार हम क्लास में बोल रहे हैं। आप अपना ब्रेन को थोड़ा सा नॉर्मल बनाइए, उसको थोड़ा सा समझिए, पेशेंस रखिए। गुड है। कंक्लूजन जो मैंने बताया वही लिख देते हैं।
1 molecule of urea need 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecule of ammonia. Second source of ammonia, aspartic acid. Third, 3 ATP used. 2 in mitochondria and 1 in cytoplasm. साइटोप्लाज्म को हम लोग साइटोसोल भी बोलते हैं. Number 4, gross water molecule released. 2, net release 1. This is the end of the urea cycle. So हम लोग अभी नंबर 3 में आते हैं. यूरिकोटेलिज्म. यूरिकोटेलिज्म में क्या एक्सक्रीट करेंगे हम? यूरिक एसिड. फिर एक्सक्रीट यूरिक एसिड. And these are called as uricotelic animal. Least toxic and insoluble in water. Produces highly concentrated urine. Produces highly concentrated urine or dry urine. इसलिए इनका जो यूरिन होता है ना ड्राई होता है. मिक्स कंप्लीटली यूरिक एसिड ग्रेन्यूल ग्लोब्यूल्स होके निकल जाता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप लोग घर में वॉल लिजर्ड देखे होंगे. तो वॉल लिजर्ड का जो फेकल मैटर रिलीज होता है घर में, उसमें डार्क कलर का एक होता है कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर छोटा सा. उसके पूरे एंड में एक व्हाइट कलर का ग्लोब्यूल होगा. देखे हो? बहुत ही कॉमन चीज, सब देखते हैं. तो वो जो व्हाइट कलर का ग्लोब्यूल है वही यूरिक एसिड है. मतलब ड्राई हुआ कि मॉइस्ट? ड्राई यूरिन. बर्ड्स के केसेस में हम लोग देखेंगे जो डेफिकेशन होता है बर्ड्स का, उसमें ब्लैक कलर का तो होता ही है स्टूल. एंड स्टूल के साथ साथ जो फेकल मैटर के साथ साथ व्हाइट कलर का भी रहता है. एक छोटा सा हल्का सा लिक्विड रहता है व्हाइट कलर. तो वो व्हाइट कलर का लिक्विड क्या है? यूरिक एसिड. समझ में आ रहा है कि नहीं? It is formed from purine. Purine आप लोग पढ़े, एडेनिन एंड गुआनिन टुगेदरली कॉल्ड एज व्हाट ना? प्यूरिन. तो यूरिक एसिड किससे बनता है? प्यूरिन से बनता है. कैसे बनता है मैं दिखा देता हूं. एडेनिन प्लस गुआनिन that will be converted into xanthine and xanthine will be changed into uric acid. It is not the cytosine or thymine, it is purine, adenine and guanine. Example, insect. Next is
टेरेस्ट्रियल स्नेल्स और लैंड स्नेल्स, मतलब टेरेस्ट्रियल मलस्क। सबसे इंपॉर्टेंट रेप्टाइल, बर्ड्स। तो इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच, तो कॉकरोच क्या एक्सक्रीट करेगा? यूरिक एसिड। तो लिखा है मैंने इंसेक्ट, दिख रहा है आपको? तो यूरिक एसिड, कॉकरोच, पेरीप्लैनेटा, याद रहना चाहिए, ठीक है। हम लोग सीधा ह्यूमन बीइंग स्टार्ट करेंगे। जस्ट बिफोर दैट, ह्यूमन बीइंग तो हम लोग जानते हैं कि द किडनी इज द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, राइट? बट बिफोर दैट we need to make a list ki what are the different excretory organ found to be in the different other organisms, that is the other excretory organ in the different organisms. The first is here, that is protonephridia. नाम सुने हो? Protonephridia, simply called as solenocyte और flame cell. Flame cell तो नाम सुने? That is always called as protonephridia, solenocyte, and this is found in platyhelminthes. So platyhelminths, rotifers, some annelids, cephalopodid, list of the example you need to remember. ये और एक चैप्टर को भी ये कनेक्ट करेगा, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम आएगा ना, यही सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रोटिफर्स में फ्लेम सेल्स होते हैं, सम एनालिड्स में भी फ्लेम सेल्स होते हैं, ये एनसीईआरटी का चीज है। नंबर 2, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया is found in the annelids. Annelids including earthworm. And earthworm का साइंटिफिक नेम क्या है? फेरेटिमा। नंबर 3, Malpighian tubule. Malpighian tubule is the excretory organ in case of what? Arthropods. लेकिन सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स में नहीं होता है, इसलिए बेटर हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, इंसेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि इंसेक्ट के केस में ये होता है, ठीक है। सो इट इज फाउंड इन केस ऑफ व्हाट ना, इंसेक्ट, इंक्लूडिंग कॉकरोच। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है? पेरीप्लैनेटा अमेरिकन। नेक्स्ट इज ग्रीन ग्लैंड और एंटेनल ग्लैंड। नंबर 4, ये भी आर्थ्रोपोड में होता है, लेकिन इंसेक्ट में नहीं होता है। तो आर्थ्रोपोड के अंदर बहुत सारा एक्चुअली क्लासेस आता है, इंसेक्टा, क्रस्टेसिया, ठीक है, बहुत सारा है, हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। सो इंसेक्ट में होता है मल्पीजियन टेबल, बट एंटेनल ग्लैंड आप लोग प्रॉन खाए होंगे कभी, उसके जो अगर कोई जिंदा वाला प्रॉन देखेंगे तो उसका हेड में जो होता है ग्रीन कलर का, जो जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना ग्रीन कलर का, दैट इज एक्चुअली द एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉल्ड एज ग्रीन ग्लैंड। सो ग्रीन ग्लैंड और एंटेनल ग्लैंड फाउंड इन केस ऑफ क्रस्टेशियंस, like your prawn. And the last, number 5, coxal gland. And coxal gland is the excretory structures found in case of spider and scorpion. तो हम लोग एक छोटा सा लिस्ट बना लिए, different type of excretory organ we found in the different
organisms. Next, we are coming to human excretory system. Human excretory system is consisting of 4 parts. One pair kidney, one pair ureter, one or single urinary bladder, and single urethra. Which is paired and which is unpaired, बहुत easy है. अब देखिए राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी का जो लोकेशन है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा. राइट किडनी मैं आपके ऐसे सामने खड़ा हूं इससे, ठीक है ना. तो ये मेरा क्या राइट किडनी है कि नहीं. राइट किडनी के नीचे लीवर है, तो लीवर का लोकेशन राइट में, लेफ्ट में स्टोमक होता है. तो राइट में क्योंकि लीवर है तो इसीलिए क्या होता है ना, राइट किडनी क्या है ना, समहाउ स्लाइटली डाउन, लेफ्ट किडनी स्लाइटली अप. तो लेफ्ट थोड़ा सा अप होगा, राइट थोड़ा सा डाउन रहेगा बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ लिवर इन द राइट साइड. समझे. Let me clear all this. मैं डायरेक्शन दे देता हूं, आपको इजी हो जाएगा. This is renal vein. वेन क्या होगा, फ्रॉम किडनी होगा कि टू किडनी होगा, फ्रॉम किडनी है. एंड किडनी के ऊपर आपको ऐसे हैट शेप्ड दो स्ट्रक्चर दिखेगा, called as what ना, adrenal gland, and adrenal gland is called as suprarenal gland.
Why it is suprarenal gland? Because it is present just above the kidney renal. And this one is renal artery. Renal artery will get the blood to the kidney and away from the kidney renal vein. तो आर्टरी, रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन किसमें ज्यादा यूरिया होगा, किसमें कम यूरिया होगा? रेनल आर्टरी क्या ज्यादा यूरिया होगा. आफ्टर फिल्ट्रेशन द ब्लड इज कमिंग आउट ऑफ द किडनी मींस लेस यूरिया की मोर यूरिया लेस. समझ में आ रहा है? यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए. दिस इज किडनी. This is one pair of ureter. This is urinary bladder. This is urethra. अब देखिए यूरेटर जो ओपन हुआ है, दिख रहा है आपको? यूरेटर देखिए ऑब्लिकली अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड देन अपवर्ड. ये सब ये जो यूरेटर है कैसे ओपन हुआ है? पहले डाउनवर्ड देन अपवर्ड. इसके वजह से यूरिन जो है वो बैक फ्लो नहीं करता है. हर चीज एकदम डिजाइन्ड है पूरा एकदम बढ़िया तरीके से. एंड द ओपनिंग ऑफ बोथ यूरेटर and the opening of urethra, these are present in the triangular form. दिखा? Is called as trigon. The opening of two ureter and the opening of urethra is being arranged in the triangular form called as trigon. Finished? Yes, sir. So let's move. चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में. हाँ कंप्लीट. अरे क्या है, जो किडनी तो बनाना है, थोड़ी ना किसी को दान करना है. Coming to the structure of kidney. स्ट्रक्चर ऑफ किडनी मतलब पहले किडनी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं. वन बाय वन जाएंगे. किडनी, देन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा. बिफोर स्टार्टिंग द किडनी एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, एंड दैट इज व्हाट, इन केस ऑफ male frog and in case of male human, दोनों को बेस करके एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है. मेल फ्रॉग में यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट. भाई यूरिनोजेनिटल का मतलब क्या है? That will carry both urine plus sperm. Is called as what? So urinogenital duct will carry both urine and sperm. So who act as urinogenital duct? Ureter की urinary
और यूरेथ्रा क्या है? यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट इन मेल फ्रॉग, लेकिन ह्यूमन बीइंग में यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट और यूरेथ्रा एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट, और इसीलिए यही क्वेश्चन पूछेगा। So in human male, the urethra act as urinogenital duct। अभी हम लोग किडनी स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किडनी आते हैं। It is reddish brown, bean shaped, present either side of vertebral column। वर्टिब्रल कलम तो ये वर्टिब्रल कलम, वर्टिब्रल कलम में कितना बोन है? 26 वर्टिब्रे प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कलम। What is the exact location at which the kidney are present? What is the exact location? At T12 to L3 क्या है? T12 to L3 मतलब 12 thoracic से लेके 3rd लंबर तक, ये जो गैप है ना, हम लोग पता है कि सर्वाइकल 7 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar, 1 sacral and 1 coccyx। 7 plus 12 plus 5 plus 1 plus 1 26। तो वर्टिब्रे के दोनों साइड में किडनी। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? T12 to L3, दैट इज द लोकेशन वेयर द किडनी इज प्रेजेंट। एंड उसका डायमेंशन क्या है किडनी का? टेन to 12 सेंटीमीटर into 5 to 7 सेंटीमीटर into 2 to 3 सेंटीमीटर। लेंथ with thickness। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बोला था एसिमेट्रिक पोजीशन। लेफ्ट किडनी is higher than right due to position of liver on right side। तो ये एसिमेट्रिक पोजीशन हो गया किडनी का, याद रखिएगा। द लास्ट वन इज रिट्रोपेरिटोनियल पोजीशन। इसको भी समझ लीजिए, रिट्रोपेरिटोनियल पोजीशन क्या है। देखिए सब लोग, एवरीबॉडी सी, ये मैं आपके सामने खड़ा हूं तो ये बेली साइड क्या है? वेंट्रल है। बैक साइड क्या है? डॉर्सल है। किडनी जो है ना वो पीछे की तरफ, डॉर्सल की तरफ। तो डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ किडनी फ्यूज हुआ है। तो किडनी का डॉर्सल साइड फ्यूज्ड है कि वेंट्रल साइड फ्यूज्ड है? डॉर्सल साइड ऑफ किडनी फ्यूज्ड विद द डॉर्सल बॉडी वॉल। तो वेंट्रल साइड क्या है? फ्री है। एंड वेंट्रल साइड में ही सिलोमिक एपिथेलियम प्रेजेंट है।
Coelomic epithelium scientifically called as peritoneum. क्या है? As the ventral side is free, dorsal side attached to the body wall. So peritoneum or coelomic epithelium should be present only in the ventral side. Yeah, both side. Only ventral side. That is called as retroperitoneal. ठीक है? As kidney attached to dorsal body wall. So coelomic epithelium और peritoneum only present on ventral side. Called as retroperitoneal position. And इसका जो weight है it is 120 to 170 gram. तो हम लोग अभी डायग्राम बना लेते हैं किडनी का. देन नेफ्रॉन स्टार्ट करें. चलिए मैं किडनी का डायग्राम बना लेता हूँ पहले. हो गया. हो गया. So let's see.
पहली बात तो ये है कि किडनी के दो पार्ट है. The outer part is called as renal cortex, जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल में मार्क कर देता हूँ. This is the outer part of the kidney called as what? Renal cortex. And जो बाकी जो part हो गया inner part is called as what? The renal medulla. ये जो पेंसिल में मैंने मार्क किया this is actually renal cortex. बाकी जो inner part हो गया that is actually renal medulla. किडनी के ऊपर और दो लेयर प्रेजेंट है, तीन लेयर प्रेजेंट. मैं एंटायर किडनी को कवर नहीं कर रहा हूँ, टाइम लगेगा, इसीलिए मैं खाली लेवलिंग करने के लिए एक छोटा सा पार्ट खाली आपको दिखा दिया. तो आउटर लेयर ऑफ द किडनी is called as renal fascia. Middle is called as adipose capsule. The inner is called as renal capsule. Renal fascia is made up of fibrous tissue. आपको याद होगा हम लोग मसल चैप्टर पढ़े थे तो वहां पे भी फैसिया था, याद आया? सेम फैसिया यहाँ पे भी है, वहां पे मसल फैसिया था, ये यहाँ पे रेनल फैसिया है. Adipose tissue is made up of, sorry, adipose capsule is made up of adipose tissue. And renal capsule is made up of dense regular tissue or dense fibrous connective tissue, white fibrous connective tissue, जो भी लिखिए. ये तो कवरिंग हो गया. Now already I have told this is the renal cortex, that is outer. And याद रखिए हम बाद में देखेंगे, आप लोग नेफ्रॉन जानते हैं, नेफ्रॉन का क्या है ना, ग्लोमेरुलस, बॉमेंस कैप्सूल, पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी. थोड़ा आइडिया है? आइडिया तो है, लेकिन मेन चीज आप लोगों को पता नहीं. मेन चीज ये है उसमें कुछ पार्ट टेढ़ा मेढ़ा पार्ट है, कुछ पार्ट स्ट्रेट है. स्ट्रेट पार्ट कम्स अंडर व्हाट ना, मेडुलरी पार्ट. एंड जितना भी कन्वल्यूटेड पार्ट है वो कहाँ पे है? कॉर्टेक्स. इसीलिए कॉर्टेक्स आपको कैसे दिखाई देगा, ग्रेन्युलर की नॉन ग्रेन्युलर? ग्रेन्युलर. लेकिन मेडुला कैसे दिखाई देगा? स्ट्रेट पार्ट है ना, आपको क्या दिखेगा? सिस्टमेटिकली दिखेगा, दैट इज नॉन ग्रेन्युलर. कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स with all convoluted part, of nephron. So are granular. This is renal medulla.
with all straight part of nephron, so non-granular. एंड जहां पे रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडुला दोनों का जंक्शन है, ठीक है ना, जहां पे दोनों का जंक्शन से, दैट जंक्शन पॉइंट इज ये जो मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया, दिस इज द जंक्शन पॉइंट एंड दैट जंक्शन पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, juxtamedullary or juxtaglomerular part. It's called as juxtaglomerular part. Juxtaglomerular part. Junction of cortex and medulla. ये है, समझ में आ गया? Yes or no? Very good. अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। मेडुला, आप देखिए मेडुला में बहुत सारे लोब्स आपको दिखाई दे रहा है। These are called as renal pyramid. And each renal pyramid gives rise to what ना, minor calyx. दिख रहा है आपको? जितना रेनल पिरामिड है उतना माइनर कैलिक्स है, एंड माइनर कैलिक्स टुगेदर टू फॉर्म व्हाट ना, मेजर कैलिक्स. क्या बोलेंगे उसको? मेजर कैलिक्स. कैलिक्स है सिंगुलर, कैलिसेस है प्लूरल. ये कैलिक्स है मतलब सिंगुलर. मेनी माइनर कैलिक्स टुगेदर टू फॉर्म व्हाट, मेजर कैलिक्स. यहाँ पे जैसे जितना रेनल पिरामिड होगा उतना ही माइनर कैलिक्स होगा, लेकिन दो तीन माइनर कैलिक्स ऐड होके क्या बनेगा, मेजर कैलिक्स. एंड मेजर कैलिक्स अल्टीमेटली ओपन्स इनटू व्हाट ना, रेनल पेल्विस. And renal pelvis will pass the urine through the ureter, and ureter से urinary bladder, then urethra. Okay. Now see, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, cortex innervated into the medulla और medulla innervated into cortex. अब देखिए ना डायग्राम, मैंने आपको एरो मार्क दे दिया है. cortex innervated into medulla, that is called as renal columns of Bertini. So renal columns of Bertini is the extension of cortex into medulla. So the extension of cortex into medulla, that is renal columns of Bertini, and this is the vertical section of human kidney, or simply kidney.
Finish it. So we are coming to the next. किडनी कंप्लीट हो गया, नेफ्रॉन में आते हैं. Nephron, that is uriniferous tubule. Structural and functional unit of kidney, and approximately 1 million in each kidney. So 1 million nephron in each kidney, so total हो गया 2 million. ये एक्चुअली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. क्वेश्चन आता है कि ग्लोमेरुलस एंड बॉमन्स कैप्सूल बोथ आर द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन or glomerulus is not the part of nephrons, Bowman's capsule is not the part of nephrons. क्या करेक्ट? ग्लोमेरुलस देखिए मैं आपके सामने डायग्राम कर रहा हूँ. ग्लोमेरुलस इज ए ब्रांच्ड कैपिलरी नेटवर्क. दिख रहा है आपको? ग्लोमेरुलस इज ब्रांच्ड कैपिलरी और ब्लड वेसल का ही पार्ट है ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. ग्लोमेरुलस तो ब्लड वेसल है, ब्लड कैपिलरी है, तो नेफ्रॉन का पार्ट कैसे हो गया? एंड और एक चीज यहाँ पे देखिए, एफरेंट एट्रियोल मैंने क्या किया है? वाइडर किया है कि नैरो किया है? एंड इफरेंट एट्रियोल नैरो किया है. उसका सिग्निफिकेंस है, हम जब यूरिन फॉर्मेशन बताएंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा. डायग्राम ध्यान से.
comes to the leveling. तो यहाँ पे मैं डिमार्केटेड कर देता हूँ, ध्यान रहेगा आपका। ये जो डिमार्केशन मैंने किया है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, कन्वोल्यूटेड है कि नॉन कन्वोल्यूटेड है? कन्वोल्यूटेड है, मतलब प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स और प्रेजेंट इन द मेडुला। समझ में आ रहा है? एंड मेडुला को भी हम दो पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, आउटर मेडुला एंड इनर मेडुला। So this is present in the cortex. This is present in the outer medulla. And this is present in the inner medulla. बाकी ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिले है, एंड दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिले, राइट? अब क्लोजली देखिएगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिले के पास जो भाषा रेखा है वो असेंडिंग है कि नहीं? एंड असेंडिंग लूप ऑफ हिले के पास जो भाषा रेखा है वो क्या है ना, डिसेंडिंग। दिख रहा है आपको? तो काउंटर करंट एग्जिबिट करेगा। चलिए लेवलिंग में आते हैं। This is afferent atrial. This is efferent atrial. This is glomerulus. This is Bowman's capsule. Afferent atrial wider lumen है. This is narrow lumen. Glomerulus is actually blood capillary है. Is actually branched blood capillary. And glomerulus and Bowman's capsule togetherly called as what? Malpighian tubule की Malpighian body. Malpighian tubule तो कॉकरोच में था. क्या है Malpighian body और Malpighian corpuscles. Malpighian body और Malpighian corpuscles. Next, this part is called as what? Na proximal convoluted tubule called as what? PCT. Okay. This is called as what? Na DCT or distal convoluted tubule. अब देख सकते हैं कि देखो DCT देखो क्लोज टू ग्लोमेरुलस है कि नहीं? इसका सिग्निफिकेंस हम बाद में बताएंगे. DCT is close to the Bowman's capsule. Now, in between the parietal layer and visceral layer, what is parietal and visceral layer? Bowman's capsule में देखो दो layer present है. One is
close to the glomerulus called as what na? Visceral layer. And visceral layer is inner and with squamous epithelial cells and podocyte. Squamous epithelial cells and podocyte. मैं आपको पोडोसाइट क्या है बताऊंगा. Outer is called as what na? Parietal. Outer is called as parietal layer, and parietal layer is outer and with squamous only. यहाँ पे पोडोसाइट एब्सेंट है, ध्यान रखिएगा. इसीलिए मैंने डायग्राम में भी पोडोसाइट आपको दिखाया है. मैं आपको और दूसरा डायग्राम करके दिखाऊंगा कि पोडोसाइट कैसे दिखता है ना. इफरेंट एट्रियोल धीरे धीरे देखो आगे चल के उसको बोलेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी. Peritubular capillary present in the cortex or present in the medulla. कहाँ पे भाई? Cortex में है कि नहीं? The extension of the efferent arteriole to form what? The peritubular capillary that is present in the cortex, and यही peritubular capillary आगे चल के क्या बनाएगा? भासा रेक्टा. भासा रेक्टा का लोकेशन क्या है? Cortex और medulla? Medulla. वही जब कॉर्टेक्स में होगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, तब मेडुला में आ जाएगा भासा रेक्टा. And this is the descending loop of Henle, ascending loop of Henle. So this is your loop of Henle. This is descending and this is ascending. And this part is called as hairpin. Hairpin part of loop of Henle. So this is the hairpin part of loop of Henle. समझ में आ गया? Now this DCT gives rise to the formation of collecting tubule. Collecting tubule together to form collecting duct. And collecting duct together to form duct of Bellini. And duct of Bellini is ultimately opens to into minor calyx. तो मैं अगर फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन. Which of the following is not the part of nephron? Glomerulus. Only glomerulus. या और कुछ भी है? यहां तक नेफ्रॉन है. अरे है कि नहीं? उसमें ग्लोमेरुलस तो इंक्लूडिंग नहीं हुआ, लेकिन ये भी तो सारे के सारे नेफ्रॉन है. कलेक्शन ऑफ नेफ्रॉन गिव्स राइज टू द कलेक्टिंग टिब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट एंड डक्ट ऑफ बेलिनी. ये सारे के सारे क्या पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है? नहीं है. बहुत ही माइन्यूट लेवल में क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग वहीं पे फंसते हैं.
देखिए मैं यहाँ पे और एक लास्ट चीज बताने वाला हूँ। दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ विसरल लेयर। किसका है? विसरल लेयर का डायग्राम हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। पैरेंटल नहीं दिखा रहे, क्या दिखा रहे? विसरल। विसरल लेयर मैंने आपको बताया था कि स्क्वामस एंड पोडोसाइट बोथ होता है। दिस इज एक्चुअली पोडोसाइट and these are actually squamous. Podocyte actually modified squamous. Podocytes are actually modified squamous. And podocyte में खास बात क्या है ना? पोडोसाइट में ये स्लीट पोर प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको? स्लीट पोर, एंड उसी स्लीट पोर के थ्रू फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। So these are the slit pores or filtration slit. फिल्ट्रेशन स्लिट के थ्रू ये फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। फिर फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगा? विसरल लेयर और पैरेंटल लेयर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट ना? पोडोसाइट्स। समझ में आया? और ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, इतना ही काफी है। एंड आई होप आप लोगों को पूरा डायग्राम समझ में आया।